learn this this overview of these boilers, how these boilers work in steam boiler chapter. So these models are available in our laboratory. This is a locomotive boiler जो ट्रेन में पुरानी ट्रेन जो थी स्टीम ऑपरेटेड के उसमें ये बॉयलर यूज होता था. Then these are the other models of mountings and accessories of steam boiler. तो स्टीम बॉयलर में माउंटिंग एंड एक्सेसरीज यूज होगी उन सब का मॉडल्स है. प्रेशर गेज. So through these models we can learn how it actually works in boilers. And these are the models for two-stroke engines, petrol and diesel engines, the two-stroke engines. And these are the model for four-stroke petrol and diesel engines. Okay. And this is the model of a centrifugal pump. These are some more models of coupling and clutches. हमारी बाइक में जो क्लच आते हैं बाइक में कार में वो कैसे वर्क करते हैं वो हम स्टडी करेंगे थ्रू दिस मॉडल्स. एंड दीज आर द कपलिंग्स, हाउ टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स. अगर मोटर को मशीन के साथ कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे. सो दैट इज द कपलिंग which is used to connect motor and machine or any two shafts. So these models are available in our college lab. So now let me start the chapter. I'm starting the chapter steam boilers. These are the models. So first of all, what is boiler and where it is used? We all are using electricity at our home. That electricity is generated in power plants. And this is a typical power plant cycle, very basic cycle of a power plant, how power plant works. So first of all, water goes inside the boiler. So this is the boiler that we are going to study. In boiler, steam is generated, means water is converted into steam, high pressure steam. And that high pressure steam will go into turbine. So turbine will rotate. So we will convert this rotary motion of the turbine into electricity. And the steam that has done the work in turbine. So whatever the leftover steam is there, it is coming out of the turbine and going inside the condenser. So in condenser, the steam will again converted into water, and that water is again pumped inside the boiler. So boiler is basically a device which generates steam, high pressure and high temperature steam. So let's define the boiler. Steam boiler is a closed vessel. Okay. Closed vessel होगा in which heat produced by combustion of fuel is utilized to generate steam from water. हम पानी को गर्म करके steam में convert करते हैं by burning fuel. Okay. And the steam is at desired temperature and pressure. This temperature and pressure is the design temperature and pressure that we require in different power plants. So according to IBR, Indian Boiler Regulation Act 2007, this is the definition given for the boiler. So there are different segments. कि अगर आप इनको segment wise consider करोगे तो ये definition easy to understand है. Let me explain this. Boiler is a closed vessel. First point is it is a closed vessel. उसमें connections होंगे but वो भी valve through होंगे. Okay, so it is a closed vessel in which steam is generated with capacity exceeding 25 liters
Okay, this 25 liters is actually volume of this vessel. जनरली हमारे घर पे फ्रिज भी आते हैं, वो भी 200 लीटर्स के अप आते हैं या 345 liters likewise. Okay. So this closed vessel should have volume more than 25 liters and gauge pressure greater than or equal to 1 kg per centimeter square. And pressure, second condition is pressure. It should have pressure more than 1 kg per centimeter square. Now what is 1 kg per centimeter square? 1 kg per centimeter square is actually 1 bar. Now what is 1 bar pressure? 1 bar pressure is actually 1 atmospheric pressure. Now what is atmospheric pressure? Atmospheric pressure is the pressure that we feel in our environment. हम अभी बैठे हैं तब हमारे ऊपर जितना भी प्रेशर एटमॉस्फेयर डाल रहा है, that is 1 atmospheric pressure. So boiler is basically a vessel in which pressure should be greater than or equal to 1 bar. It means जितना अभी हम प्रेशर सेंस कर रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए. And water is heated at 100 degrees Celsius or above. So third condition is for temperature. The water must be heated above 100 degrees Celsius. Okay, that is true because we all know that the boiling point of water is 100 degrees Celsius. 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा. So if you remember these three conditions, volume, pressure and temperature, then this definition is very easy for you. Simply it is a closed vessel with volume exceeding 25 liters, pressure exceeding 1 bar and temperature exceeding 100 degrees Celsius. So any vessel which satisfies all these three conditions is called a boiler. हमारे घर पे जो प्रेशर कुकर होता है उसको भी हम बॉयलर कंसीडर कर सकते हैं, because volume of our pressure cooker is nearly 25 liters or more than 25 liters. So if you want to visualize what is 25 liters, then consider these things. 1 meter cube of volume is actually equal to 1000 liter. 1 meter cube is equal to 1000 liter. तो मीन्स अगर कोई वॉल्यूम है, अगर कोई क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर बाई 1 मीटर and depth भी है 1 meter, so its volume will be 1 meter cube. If you try to find the volume of pressure cooker available at your home, if its pressure is more than 25, volume is more than 25 liters, then it is called a pressure vessel, provided it should satisfy other two conditions also. The pressure inside that must be greater than 1 bar and temperature must be 100 degrees Celsius or above. So this is the definition of a boiler. Now where do we use this steam? बॉयलर के अंदर जो स्टीम जनरेट हो रही है वो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो स्टीम कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग पावर इन स्टीम इंजन एंड स्टीम टर्बाइंस. यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने दिखाया था कि पावर प्लांट साइकिल में टर्बाइन एक डिवाइस होता है, उसके अंदर हम स्टीम इंसर्ट करते हैं तो टर्बाइन रोटेट होता है और उस रोटेशन को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो स्टीम can be used to generate power in steam turbine or steam engine. It can be used at low pressures for industrial process works in cotton mills, sugar factories, etc. So despite of using it for generating power, we can also use this for processing in sugar factories or cotton mills.
and in some cold areas like foreign countries for producing hot water supply. कि अगर आप कोल्ड प्लेस पे घूमने भी जाओगे तो वहाँ पे होटल्स में गर्म पानी सप्लाई करने के लिए बॉयलर का यूज होता है. So these are the use of steam that is generated in boiler. So now we know what is boiler and what are its applications. So there are different kind of boilers are available. So classification of boilers are given. So we'll quickly go through it. First classification is according to geometric orientation of boiler. Means boiler का orientation क्या है उसके basis पे. First one is horizontal axis boiler and second is vertical axis boiler. So according to geometric orientation of boiler, boiler can be classified as horizontal axis boiler and vertical axis boiler. So these three figures are examples of a horizontal axis boiler. Now, why do you call it a horizontal axis boiler? Because if the axis of the boiler is horizontal, then it is called horizontal axis boiler. अगर आप इन थ्री फिगर्स में देखोगे तो ये जो सिलेंडर है, दिस वन, it is called drum. In this figure also you can see this silver color drum, and in this figure also you can see here. So you see in all these three figures the axis of this drum is in horizontal direction in all these three figures. So that is why these boilers are called as horizontal axis boilers. So this one is the Lancashire boiler, this one is locomotive boiler, and third one is Babcock and Wilcox boiler. Okay, don't worry about the names. Okay, इस नेम से आप used to हो जाओगे once we go to the chapter. Okay, right now these names are new for you, so it's okay if you are not able to remember it. Once we finish this chapter, you will get used to these names, so it will be easy for you to identify the boilers by their names. So this thing is clear. Horizontal axis means the axis of this drum is in horizontal direction, and vertical axis boiler means the axis of this drum is in vertical direction. See in this figure, this is the Cochrane boiler. Okay, the drum is over here. Okay, and you see the axis of this drum, you can say longitudinal axis of this drum is in vertical direction, so that is why it is called vertical axis boiler. This is the detailed figure, so we will learn this also. So this is vertical axis boiler. Now second classification is according to relative position of water and hot gases. So in boiler, what we are doing? We are actually boiling the water. So there will be water somewhere and there will be flue gases somewhere. So suppose this is the pipe and inside it flue gases are flowing. Now what is flue gases? Flue gases are the gases produced after burning fuel. हम fuel को जब burn करते हैं, so some gases are produced which are hot. Okay, so that gases are passing through this tube, and this tube is surrounded by water. So the boiler in which this kind of arrangement is there is called fire tube boilers. Because to convert water into steam, we require heat. So we are transferring the heat from flue gases to water which are surrounding the pipe. So
The boiler in which the flue gases are passing inside the tube and water is available surrounding the tube, then that boiler is called fire tube boiler. And the another sub classification is water tube boilers. So it is opposite to previous one. Now in these boilers, the water will be flowing inside the tube and flue gases will be surrounding the tube. Okay, so now the flue gas will transfer the heat inside the tube. So it will heat up the water and water will be converted into steam. So the boiler in which this kind of arrangement is there is called water tube boiler. Let me show you the model here. So see this figure. So in this silver drum and these tubes, you can see here silver tubes are there. Okay, so inside that tubes, water will be there. And over here, our fuel will be burnt. Okay, so the flue gases will be moving upward direction. So in this arrangement, you can see the water is inside the tube and flue gases are surrounding the tube. Okay, so this boiler is called water tube boiler. And in this figure, you see the drum is over here. This blue color is actually representing water. Okay, so you can see inside drum there is water, but this orange color line you see, these are the tubes. तो यहाँ पे जो फ्यूल बर्न हो रहा है तो उससे जो फ्लू गैसेस जनरेट हो रहा है वो फ्लू गैसेस इन ट्यूब्स में से पास हो गए and these tubes are surrounded by water. So this boiler is called fire tube boiler because inside tube there is flue gases. That is the classification according to relative position of water and hot gases. Third classification is according to location of furnace. Now furnace is a place where we are burning the fuel, जहाँ पे हम fuel को burn करते हैं. So according to location of furnace, the boilers can be classified as externally fired boilers and internally fired boilers. Now as the name suggests, externally means बाहर से और internally means अंदर से. So externally fired boiler means we will burn the fuel outside the boiler shell. Means ये जो सिल्वर कलर का शेल है बॉयलर शेल, उसके बाहर हम फ्यूल बर्न करेंगे. So in this particular Babcock and Wilcox boiler, you can see boiler shell is over here and furnace is over here. So fuel is burning outside the boiler shell. Okay. So in the boiler, the furnace is placed outside the boiler shell is called externally fired boiler. And in internally fired boiler, you can see the boiler shell is over here. This is the boiler shell, and you see furnace is located over here. This is the furnace. So you see furnace is available inside the boiler shell. So that is why it is called internally fired boiler. We are burning the fuel inside the boiler shell only. So that is why it is called internally fired. The example is Cochrane boiler and Lancashire boiler. Fourth classification is according to method of water circulation. मीन्स बॉयलर के अंदर जो वाटर है वो सर्कुलेट कैसे हो रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है. तो इन दैट नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर्स.
नाउ व्हाट इज नेचुरल सर्कुलेशन? नेचुरल सर्कुलेशन क्या है? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे इन रियल वर्ल्ड, लेट मी गिव यू द एग्जांपल। सपोज दिस इज द ग्राउंड, एक ग्राउंड है और इसके ऊपर कंटिन्यूअसली जो सूरज की किरणें हैं वो इम्पैक्ट हो रही है। तो ग्राउंड विल बी हीटेड, एंड देयर विल बी सम एयर। ग्राउंड के आसपास कुछ एयर होगी। So this ground will transfer the heat to the air. So because of that, the air will get heated up. Air जो होगी वो गर्म होगी। तो गर्म होगी, उससे क्या होगा? अगर आप एयर को गर्म करते हो तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो हल्की हो जाती है हवा। एंड देयर बी सम एयर प्रेजेंट ओवर हियर विच इज फार अवे फ्रॉम ग्राउंड। कुछ हवा ऊपर भी होगी जो ग्राउंड से काफी दूर होगी। So this air will be cold and this air near to ground will be hot. So cold air will be having higher density and hot air is having lower density. So now because of this density difference, this heavy air will move downward and this lighter air will move upward. Okay. So the flow will be set up। या जमीन के पास जो हवा आएगी वो गर्म होगी, गर्म होके डेंसिटी कम होगी उसकी, तो ऊपर लिफ्ट होगी, ऊपर जाएगी तो फिर से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगेन डेंसिटी जैसे ही बढ़ जाएगी वो अगेन नीचे आएगा, एंड अगेन नीचे आके अगेन वो ग्राउंड के साथ में कांटेक्ट में आएगी हवा, तो अगेन गर्म हो जाएगी। सो ये साइकिल सेटअप हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली द एयर इज flowing around us, because of this pressure difference and temperature difference। हमारे आसपास जो हवा मूव होती है that is moving because of this density difference। so that is called natural circulation, जो अपने आप होता है, हम इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, वो हवा अपने आप गर्म हो रही है, अपने आप ऊपर जा रही है by nature। so that is why it is called natural circulation। so this is natural circulation। Now how it is used in boiler? How this funda is used in boiler? Okay. So in boiler you can see these pipes are surrounded by flue gases। okay. तो ये पाइप के अंदर का जो वाटर होगा वो गर्म होगा। okay. तो गर्म वाटर होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, और वाटर अगर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उसकी डेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। okay. So lower density steam will move upward and water is having higher density as compared to steam, so this higher density steam will move downward। so this circulation will set up automatically once we heat up this water। अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो ये सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। so that is why this is called natural circulation boilers। so the boiler in which this kind of circulation is happening is called natural circulation boiler। and another one is forced circulation। now as the name suggests, we are forcing the steam for circulation, means हम steam को धक्का मार रहे हैं to circulate inside the boiler is called forced circulation। so in this definition you can also read water flow takes place by a pump, means हम एक extra pump रख रहे हैं which is forcing the water to flow to the boiler। so that is the forced circulation boiler। okay, just a minute। sorry for the disturbance। okay, so next classification is according to working pressure। so as I said, boiler के अंदर कुछ pressure होता है, तो उस प्रेशर के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन है। अगर प्रेशर हाई होगा तो हायर प्रेशर बॉयलर,
मीडियम होगा तो मीडियम प्रेशर बॉयलर एंड लो होगा तो लो प्रेशर बॉयलर. So how we define high? What amount is high pressure and what amount is medium pressure and what amount is lower pressure? So a pressure in which pressure is higher than 25 bar. 25 बार मीन्स अभी हम जो फील कर रहे हैं वो 1 बार है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर हमारे ऊपर ऐसे 25 एटमॉस्फेयर रख देंगे तब जितना प्रेशर हम फील करेंगे दैट इज 25 बार प्रेशर. दैट इज वेरी हाई प्रेशर. So it is called high pressure boiler. Babcock and Wilcox boiler, the boiler that I have shown right now, that is Babcock and Wilcox boiler. जो मैंने दिखाया था ट्यूब्स वाला, that is Babcock and Wilcox boiler. It is high pressure boiler. Let me show you again. This one is Babcock and Wilcox boiler and it is higher pressure boiler. इस boiler के अंदर pressure जो है वो 25 बार से ज़्यादा होगा. Medium pressure boiler in which working pressure is from 10 bar to 25 bar. अगर 10 से 25 बार के बीच में होगा then it is called medium pressure boiler. Example is Lancashire boiler and locomotive boiler. Locomotive boiler that I showed you. Okay. This one is Lancashire boiler and this one is locomotive boiler. These two are medium pressure boilers. And low pressure boiler, boiler in which pressure is 3.5 to 10 bar, then it is called lower pressure boiler. Okay. An example is Cochrane boiler and Cornish boiler. So in our syllabus only Cochrane boiler is there, so Cochrane boiler, this boiler over here is Cochrane boiler. And the next classification according to mobility of boiler. Now what do you mean by mobility? Mobility is actually ability to move. You have heard the sentences like mobile van or mobile COVID-19 testing. So mobile means the device which can move is called mobile. Don't get confused with your cell phone. Okay. Mobility means ability to move from one place to another place. So according to mobility of boiler, there are two classifications: stationary boiler and mobile boiler. Okay. Now stationary boiler means the boiler which cannot be moved. अगर हम बॉयलर बनाते हैं और उसको मूव नहीं कर सकते, ऐसा कोई बॉयलर होगा, उसको स्टेशनरी बॉयलर बोलेंगे. मीन्स इट कैन नॉट मूव, इज स्टेशनरी. स्टेशनरी बॉयलर्स आर यूज फॉर पावर जनरेशन. जो बड़े बड़े बॉयलर्स आते हैं पावर प्लांट्स में, वो जनरली स्टेशनरी बॉयलर्स होंगे. एक बार हमने वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया तो वो मूव नहीं होगा, वहीं पे वर्क करेगा. एंड mobile boilers are the boilers which can be easily moved. What kind of boiler is there? You all must have seen the Harry Potter movies. In that movie we have seen that train. ने ट्रेन देखी होगी, वो काफी सारा धुआं छोड़ के जाती होगी. Okay, that is train operated by steam. Okay. उस ट्रेन में जो इंजन होता है वो स्टीम इंजन होता है. वो बहुत पुरानी ट्रेन जो आती थी, that was steam operated trains. तो उसमें जो बॉयलर यूज होता था उसको हम मोबाइल बॉयलर बोल सकते थे. जो लोकोमोटिव बॉयलर में मैंने दिखाया अभी, विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हम जानते हैं कि ट्रेन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकती है. सो दैट बॉयलर इज कॉल्ड मोबाइल बॉयलर. राइट नाउ स्टीम ट्रेन्स आर नॉट इन यूज. अभी जो ट्रेन्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स है. So we have switched from steam to electric. So according to mobility, stationary boiler and mobile boiler. Then I think last classification according to number of tubes inside the boiler. Means boiler के अंदर कितनी tubes है उसके बेसिस पे सिंगल ट्यूब बॉयलर एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर. अगर किसी बॉयलर में एक ही ट्यूब होगी तो उसको बोलेंगे सिंगल ट्यूब बॉयलर. अगर एक से ज़्यादा ट्यूब होगी
तो उसको बोलेंगे मल्टी ट्यूब बॉयलर. Let me show you the boilers. You can see in this Babcock and Wilcox there are more than one number of tubes. You observe this. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so many tubes means more than one. So it is called multi-tube boiler. As well as you see in Cochrane boiler also this is the tube. So this is also multi-tube boiler. As well as if you observe the Lancashire boiler, in these also these are the two tubes. You will get better idea once we go inside these boilers. Okay, once we start the topic of boilers, you will get better idea about classification also. Right now, just keep in mind that boiler in which there is only one tube is called single tube boiler. More than one tube, it is called multi tube boiler. In our syllabus, three boilers are there: Lancashire boiler, Babcock and Wilcox boiler, and Cochrane boiler. These three boilers we are going to study. Okay, how they work, what is their construction, that we will study. Okay, and all these three boilers are multi-tube boilers. So this is the classification of steam boilers. We are having 10 minutes. So let me go to the difference between fire tube and water tube boiler. So now, what is the difference between fire tube and water tube boiler? Fire tube boiler and water tube boiler. तो अभी क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था फायर ट्यूब मीन्स जिसमें ट्यूब के अंदर फ्लू गैसेस होते हैं और सराउंडिंग में वाटर होता है, उसको बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर. एंड वाटर ट्यूब मीन्स ट्यूब के अंदर वाटर होगा और सराउंडिंग में फ्लू गैसेस होंगे. So that boiler is called water tube boiler. So now what is the difference between them? This difference can be asked in for 4 marks in exam. और अभी जो क्लासिफिकेशन करवाया है तो क्लासिफिकेशन भी एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी. Don't worry if you are not able to remember it. Once we complete this chapter तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा क्लासिफिकेशन याद रखना. तो fire tube boiler and water tube boiler. So what is the difference between them? So first point, position of water and hot gases. Water कहाँ पे होता है और hot gases कहाँ पे होते हैं? So in fire tube boiler, hot gases inside the tube and water outside the tube. In water tube boiler, water is inside the tube and hot gases are outside the tube. Then second point, according to operating pressure, generally fire tube boilers जो है, its pressure is limited to 25 bars. It is limited to 25 bars. So according to classification, it will come into the range of medium pressure boiler. And for water tube boiler can work for pressure more than 125 bar. Okay, so you see 125 is way too much high. So water tube boilers, you can say they are high pressure boilers, water tube boilers, because in that pressure can be up to 125 bar or more than 125 bar. Then rate of steam generation means steam कितनी जल्दी से जनरेट होगी. It is rate of steam generation means how much rapidly it gets generated steam. 5 मिनट में बन जाती है या 10 मिनट में बन जाती है according to that. So fire tube boiler, they are medium to low pressure boiler. So rate of steam generation is lower. Steam बनने में थोड़ी देर लगती है fire tube boiler में. While in water tube boiler, the rate of steam generation is higher. जल्दी से बन जाती है steam in water tube boiler. Suitability of fire tube boiler is
It is not suitable for large power plants. Not suitable. ये फायर ट्यूब बॉयलर है वो पावर प्लांट्स में यूज नहीं कर सकते. While water tube boilers can be used for generating power in power plant. Chances of explosion. फटने के चांसेस ज्यादा किसके हैं? तो इन फायर ट्यूब बॉयलर वी नो दैट फायर ट्यूब बॉयलर प्रेशर जो है वो काफ़ी कम होता है. तो प्रेशर कम होता है मीन्स वो इजी टू हैंडल होगा, तो उसके फटने के चांसेस बहुत कम होंगे. और वाटर ट्यूब बॉयल हमने देखा कि इसका प्रेशर अप टू 125 बार तक जा सकता है. तो उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होंगे. जिसका प्रेशर ज़्यादा उसके फटने के चांसेस ज़्यादा इजी है. देन फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट मीन्स हम जिस जगह पे इंस्टॉल करेंगे तो कौन सा बॉयलर ज़्यादा फ्लोर स्पेस रिक्वायर करेगा फॉर सेम रेट ऑफ स्टीम जनरेशन. अगर मुझे 1 किलोग्राम स्टीम जनरेट करनी है तो दोनों में से कौन सा बॉयलर कम स्पेस यूज करेगा? वाटर ट्यूब बॉयलर विल ऑक्यूपाई लेस स्पेस एज कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर फॉर सेम अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेशन. अगर मुझे सेम अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेट करनी है तो जनरली वाटर ट्यूब बॉयलर हाई प्रेशर बॉयलर वो ज़्यादा स्टीम जनरेट करने के लिए बनाए गए होते हैं. Okay, so in size it will be bigger if the rate or steam generation is different, but if steam generation is same amount of steam generate करनी है तो water tube boiler जो है वो कम space use करेगा. Cost. Okay. Now we know that these fire tube boilers are low pressure boilers, so जो components बनाने होंगे उसके लिए तो उस component का costing भी कम आएगा. और वाटर ट्यूब बॉयलर है वो हाई प्रेशर बॉयलर है तो उसका जो प्लेट का थिकनेस भी लेना पड़ेगा वो भी थोड़ा मोटा लेना पड़ेगा. तो द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर आर हायर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल. नाउ व्हाट स्किल्स? इट इज बॉयलर्स आर एक्चुअली ऑपरेटेड बाय वर्कर्स. तो उस वर्कर में कितनी स्किल रिक्वायर्ड होगी? अकॉर्डिंग टू दैट, सो फायर ट्यूब बॉयलर रिक्वायर्ड लेस स्किल फॉर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक वर्किंग. ओके, बिकॉज इसके अंदर प्रेशर जो है वो काफ़ी कम है, तो उस प्रेशर को लोअर स्किल वाला वर्कर भी हैंडल कर सकता है. वाइल हैंडलिंग द हायर प्रेशर बॉयलर वी रिक्वायर मोर स्किल्ड लेबर. हमको ज़्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए होगा हाई प्रेशर बॉयलर को हैंडल करने के लिए, बिकॉज इसका एक तो कॉस्ट ज़्यादा है और फटने के चांसेस भी ज़्यादा है. तो अगर सेफली वर्क करवाना है तो हमको जो लेबर का स्किल होगा वो ज़्यादा लेना पड़ेगा. एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस स्टीम. मीन्स जो शुगर इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री में यूज़ होती है स्टीम, वो बनाने के लिए हम फायर ट्यूब बॉयलर यूज़ कर सकते हैं. वेल वाटर ट्यूब बॉयलर कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ पावर जनरेशन एप्लीकेशन में यूज हो सकता है. एंड लास्ट पॉइंट, स्केल डिपोजिशन एंड ओवरहीटिंग. नाउ व्हाट इज स्केल डिपोजिशन? तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप गांव में रहते हैं और एक पतीले में पानी रोज गर्म करते हैं नहाने के लिए. ओके, एक ही पतीला आप रोज लेते हैं पानी गर्म करने के लिए. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू सी इनसाइड दिस पैन, सो बॉटम में कुछ काई जम गई होगी. ओके, देयर विल बी डिपोजिशन एट द बॉटम इन दैट पैन. तो ये जो काई जम जाती है दैट इज एक्चुअली स्केल डिपोजिशन. बिकॉज क्या होता है, ये जो वाटर होगा वो प्योर तो नहीं होगा, उसके अंदर कुछ डर्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ इम्प्योरिटीज होगी. तो जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि वाटर पार्टिकल्स जो है वो तो इवेपोरेट होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट ये जो
हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज होती है, वो क्या करेगा, वो एज इट इज रह जाएगा, वो इवेपोरेट नहीं हो सकता. ओके, सो दैट लेयर विल बी formed at the bottom of this device. So that layer is called scale deposition. And overheating means what है, जो हमने डिजाइन किया है उससे ज्यादा हीट जनरेट होती है. So scale deposition problem is not present in fire tube boiler. There is no water tube, so no problem of scale deposition and less problem of overheating. Now, how this overheating and scale deposition are interconnected? Suppose for example आपने एक नया पतीला लिया है और एक पुराना पतीला है जिसके अंदर स्केल डिपोजिशन हुआ है. तो इन दोनों में से किस में जल्दी से स्टीम जनरेट हो जाएगी? ऑफ कोर्स इन न्यू डिवाइस, बिकॉज इन ओल्डर डिवाइस देयर इज स्केल डिपोजिशन, और ये स्केल जो डिपॉजिट हुआ है वो क्या करता है, जो भी हीट नीचे से सप्लाई हो रही है, it will not transfer that heat to water efficiently. Just a minute. It will not transfer the heat directly to the water. Okay, some heat will be stored by this scale. So because of this, the heat is not going up. So where it will go? It will be stored in this region. Okay. So this region will get overheated. So that is how the scale deposition and overheating are interconnected. So in fire tube boiler there is no problem of scale deposition, so there will be no problem of overheating. While in water tube boiler there is a problem of scale deposition, and because of scale deposition overheating will be happening, and because of overheating there are the chances that boiler may burst. बॉयलर फट भी सकता है ओवरहीटिंग के प्रॉब्लम से.